So let's move on to the next topic, which is centripetal force. Very simple concept. Let me tell you. First, we have to understand that in circular motion, why there is acceleration. Okay, what is the need of acceleration to be taken in case of especially uniform circular motion? Because आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो स्पीड कांस्टेंट है, करेक्ट, एंड स्पीड अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? So here I will clear your doubt. First of all, we have studied two types of acceleration. First is linear acceleration and second is angular acceleration. Correct? Linear acceleration में भी दो टाइप है. एक होता है radial acceleration and दूसरा होता है tangential acceleration. So radial acceleration is the one which is acting along the radius, जिसका फॉर्मूला हम लोग ने सीखा v square by r. So यही जो रेडियल एक्सेलरेशन है जो कि लीनियर एक्सेलरेशन का पार्ट है, the reason for that I am going to tell you. See, when particle is performing circular motion like this, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूअसली डायरेक्शन पार्टिकल का चेंज होना चाहिए. एग्रीड और नॉट? अगर यहाँ पर पार्टिकल है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो सीधा चला जाएगा. ओके, सो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, फिर इधर आके फिर से डायरेक्शन चेंज होना चाहिए. सो वेलोसिटी जो है वो तो फिक्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एग्रीड, बट डायरेक्शन हैज टू चेंज कंटिन्यूअसली तो ही सर्कुलर मोशन हो सकता है. नाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. सो भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना. सो सिंस देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, hence there is acceleration. So that is the reason we have linear acceleration in uniform circular motion. The reason is quite simple. Since velocity change हो रहा है, not the magnitude but the direction, and hence velocity में changes है, इसलिए acceleration है. Now let's talk about force. क्यों आएगा उसमें सर्कुलर मोशन में? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आएगा? We know Newton's second law, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता, because we cannot forget our माँ. करेक्ट, फोर्स इज इक्वल टू माँ. अब इससे क्या समझ रहे हैं? अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी तो होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? अगर एक्सेलरेशन का ही वैल्यू जीरो समझो तो फोर्स का वैल्यू भी जीरो होगा. एंड मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो डेफिनेटली फोर्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. सो एक फोर्स डेफिनेटली है फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड वही फोर्स है which is what we are going to study, centripetal force. Got this? Now let's try to understand centripetal force का फॉर्मूला क्या है. So उसके लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, it was v square upon r. तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, so that will give you m into v square upon r. So centripetal force का फॉर्मूला क्या मिला? F is equal to mv square upon r. इसको थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम लोग ने स्टडी किया हुआ है that v is equal to r omega. Linear velocity is radius into angular velocity. So ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, so therefore f का फॉर्मूला हो जाएगा m into r square omega square upon r. एक आध r का टर्म कैंसिल हो गया, एक r का टर्म बच गया, तो we are left with mr omega square. ये हो गया दूसरा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का. बट दिस, सो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड इट इज ऑलवेज directed towards the center, because acceleration भी radial है, it is also acting along the center. So same way centripetal force is also directed towards the center of the circle. Center seeking force भी इसको बोलते हैं. Okay, we call this as center seeking force. Okay,
नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होता है. ओके, आई गिव यू सम एग्जांपल्स. लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है. स्ट्रिंग के एंड पे स्टोन और एनी ऑब्जेक्ट मैंने टाई किया. ओके, सो आई हैव दिस स्ट्रिंग इन माय हैंड एंड ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने टाई किया. अब मैं इसको सर्कुलर मोशन दे रहा हूँ. ओके, लाइक दिस. So you can observe that this particle is performing circular motion. Okay, but उसका force definitely यहाँ से आ रहा है, from my hand. अगर मैंने मेरा hand का movement ही बंद कर दिया, so you can observe what is going to happen. The circular motion stops. So कहीं ना कहीं वो जो force है, वो कहीं ना कहीं मेरे हाथ से आ रहा है. And if you observe, my hand is exactly at the center of that circle. Correct or not? So यही है हमारा centripetal force. Now in this case, as per the language of physics, the centripetal force is along the tension of the string. I could say that it is due to tension in the string. Okay, अब tension का concept आपको याद होगा तो अच्छा है. Tension का concept string से related होता है या तो फिर रोप से रिलेटेड होता है. जब भी आप कुछ खींचते हो रोप से या स्ट्रिंग से तो सामने वाला पर्सन टेंशन में आ जाता है. ओके, नॉट दिस टेंशन बट पुलिंग टेंशन. अंडरस्टूड? पुल करने का एक टेंशन होता है. सो टेंशन एंड फोर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. दोनों का यूनिट भी न्यूटन ही है. फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन है. बट फोर्स में हम पुश भी करते हैं, वी पुश, बट इन टेंशन वी ऑलवेज पुल. सो इन दिस केस जो सेंट्रिपिटल फोर्स आ रहा है दैट इज ऑब्वियसली एट द सेंटर. वहां पर मेरा हैंड है बट वो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग के टेंशन से आ रहा है, ये खींच रहा है. अगर ये खींचा हुआ नहीं है, अगर ये स्लैक हो गया तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन नहीं होगा. और अगर ये खींचा हुआ है ऐसा, देन डेफिनेटली सर्कुलर मोशन पॉसिबल है. गॉट दिस? सो नाउ आई विल राइट फॉर यू सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया है which was of the tension in the string. So here I will write centripetal force is due to tension in the string. Let's take second example. अब second example लेते हैं moon का. Moon is also moving around the earth. Okay, so उधर भी एक force होना चाहिए जो earth as a center है. So earth में से कौन सा force आता होगा? So from earth it is the gravitational force due to earth. Okay, so moon के revolution में I can write gravitational force of earth on moon. Got this? ये हो गया second example. Let's take third example. Electrons. Okay, electrons का motion हो रहा है. Center में क्या होता है? There are protons, positive charge. Electrons, negatively charged. So there is some attractive force. So again वहां पर भी एक centripetal force होना चाहिए जो center से towards center. I hope center से ही understood. So in this case, the centripetal force will be due to force of attraction between what? Protons and electrons. So I hope आप देख रहे हो कि अलग अलग केसेस में सेंट्रिपिटल फोर्स का ओरिजिनेशन अलग अलग जगह से. इसमें ग्रेविटेशनल है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्रोटॉन का, इधर टेंशन है. I'll take one last example which is negotiating a curve by the vehicle on a circular track. कोई सर्कुलर ट्रैक में व्हीकल टर्न ले रहा है. सो इन दैट केस आल्सो सेंट्रिपिटल फोर्स तो चाहिए ही, बिकॉज़ वहां पर भी तो एक सर्कुलर मोशन ही हो रहा है. सो इन दैट केस द सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स and the road. Okay, so एक और नया केस आया. I will write it. It is force of friction between the tires and the road. So this is the force which is the centripetal force. Okay,
So this is how I complete the topic of centripetal force. This topic is quite important because आज हम एक topic touch करने वाले हैं, वही vehicle turn लेने वाला है, उसमें ये concept definitely use होगा. Okay. So let's move on to the centrifugal force. Okay, similar names है centripetal, centrifugal, but let me tell you centrifugal is exactly opposite of centripetal. Direction उसका centripetal से opposite होगा. अभी centrifugal force explain करने के लिए मैं आपको ना examples से ही समझाऊंगा. Let's say you are there in a merry-go-round, okay, जो सर्कल में घूम रहा है, and आपने कुछ भी होल्ड नहीं किया. ओके, यू आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग, कोई भी स्टैंड कुछ भी नहीं पकड़ा, नॉट इवन योर फ्रेंड आल्सो. ओके, एंड वो सर्कल में घुमाना चालू कर दिया बाहर से किसी ने. देन सिंस यू आर नॉट टचिंग एनीथिंग, आपको पता चल जाएगा कि विद इन 15 और 20 सेकेंड्स जब वो मेरी गो राउंड स्पीड पकड़ता है, आपको डेफिनेटली फोर्स दिखेगा. लाइक आई वुडंट से लाइक यू वुड बी एबल टू सी, बट यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस कि एक फोर्स की वजह से आप डेफिनेटली वो मेरी गो राउंड से बाहर धकेल दिए जाओगे. यू विल बी थ्रोन आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर. जबकि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ खींचने वाला होता है, बट यहाँ पर आप तो उल्टा बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर यू विल बी थ्रोन आउट. दिस एवरीवन मस्ट हैव एक्सपीरियंस. इसीलिए तो हम लोग पकड़ के रखते हैं मेरी गो राउंड में या व्हाटएवर समथिंग इज इन सर्कुलर मोशन. So definitely from this example you understand that there is one force which is directed away from the center, जिसकी वजह से bodies are thrown outwards. Okay, second example I will take. समझ लो कोई बस है जो टर्न ले रहा है. Okay, it is taking a very sharp turn towards right. Then आप जब बस में बैठे हो डेफिनेटली आपका बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव होगा, या तो फिर अगर बस राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है तो आपका बॉडी समझ जाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न होगा. सो डेफिनेटली हियर आल्सो यू ऑब्जर्व दैट देयर इज वन फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, जो धकेल रहा है आपको सेंटर से दूर. ओके, सो दैट इज व्हाट इज आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. गॉट दिस? अब इसका फॉर्मूला क्या है, लेट मी टेल यू. ये सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है. जितना वैल्यू सेंट्रीपिटल का होगा उतना ही वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल का भी होगा. सो सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला था which was mv square by r, वही फॉर्मूला इसका भी रहेगा. एंड इसको आगे सॉल्व किया तो mr ओमेगा स्क्वायर. अभी और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं सेंट्रीफ्यूगल के. लेट्स से you have a bucket, in that bucket you have water. ठीक है, वाटर पूरा नहीं भर के रखा है, लेट्स से क्वार्टर, ठीक है, 1/4 पानी भर के रखा है. नाउ व्हाट यू डू, यू ट्राई टू मूव दैट बकेट इन अ वर्टिकल सर्कल, ऐसा घुमाना चालू. ओके, एंड स्लोली घुमाओगे तो समझ जाओ क्या होने वाला है, वही वाटर आपके हेड पे गिरेगा. ओके, बट इन ऑर्डर दैट वाटर डजंट स्पिल आउट, वो वाटर नहीं गिरना चाहिए, आप ऑब्वियसली अपना सेंसेस लगाओगे एंड बकेट को कुछ ज्यादा ही स्पीड से घुमाओगे. करेक्ट और नॉट? सो व्हेन यू डू दैट, ओके, वेलोसिटी आया, करेक्ट और नॉट? सो वो स्पीड की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है व्हिच प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम फॉलिंग डाउन. इन दैट केस वाटर का जो वेट होता है, जब बकेट ऊपर है, वाटर का जो वेट है वो सेंटर से ऑपोजिट, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर देता है. I repeat, when bucket is in top position, जहां जब वाटर को गिरना चाहिए तो वाटर का जो वेट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर देता है, and hence water doesn't spill out. Okay, let's take one more interesting example of our day to day life. Dryer. Okay, अब ड्रायर वॉशिंग मशीन में देखा होगा आपने, उसमें क्या करते हैं, ऑब्वियसली कपड़े डाल दिए जाते हैं सो दैट सूख जाए. सो ड्रायर को कभी भी आप ऑब्जर्व करो, फुल स्पीड में घूमता रहता है, फुल स्पीड में. सो हो क्या रहा है उसमें, उसमें जब कपड़े रहते हैं, ओके, व्हेन इट इज मूविंग विद फुल स्पीड, एक सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है. सो उसकी वजह से क्या होगा, व्हाटएवर वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लोथ्स, दे आर थ्रोन आउट अवे फ्रॉम द सेंटर. एंड ड्रायर के पेरीफेरी पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसमें पोर्स रहते हैं, सो दैट वो वाटर बाहर की तरफ निकल जाए. That is how the
clothes are dried. So centrifugal force acts in that case also. Even washing machine में भी आप देखो, when clothes are moving, आप कभी भी clothes को center पे नहीं जमा पाओगे. Okay, you will observe that clothes are always touching the periphery of that washing machine, because clothes पे भी एक centrifugal force रहता है जो उसको बाहर की तरफ धकेलता है. So definitely वो periphery पे ही आपको clothes टच किए हुए दिखेंगे, कभी भी सेंटर पे नहीं दिखेंगे आपको. So that is what is the concept of centrifugal force. I have given you enough examples to understand what is centrifugal force. Okay, I can tell you just one thing, एक pseudo force का concept सीखा होगा last year. So this is what is our pseudo force. Pseudo force short में बता दो, it is a false force we call. Okay, it exists in non inertial frame of reference. Okay, तो ये किसके लिए बनाया जाता है? In order that Newton's laws of motion are valid. Okay, non inertial frame of reference में pseudo force को introduce इसीलिए करते, so that Newton's laws are made valid. Okay, so this was all about centrifugal force.